रुकिए रुकिए रुकिए, तीन बातें इंपॉर्टेंट आप सुन लें। उसके बाद आपको इसी वीडियो में आपकी बैंक का, आपकी ब्रांच का स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी यूट्यूब की पेमेंट रिसीव करने के लिए, या वेबसाइट की पेमेंट रिसीव करने के लिए, या किसी और कंट्री में आप जो है ना किसी से पेमेंट मंगवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड चाहिए। 36 बैंकों के स्विफ्ट कोड मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे इजी से। आपको एक क्लिक के अंदर ही आपकी बैंक का मिल जाएगा। आपको इतनी लंबी वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो पहले जो आपने इसको यूज़ कैसे करना है वो सुन लीजिएगा। पहले नंबर पे आपने इसको यूज़ ऐसे करना है कि जो आप कोई भी बैंक ले लें, ठीक है जी, चाहे MCB है, UBL है, HBL है, मीज़ान है, मतलब कोई भी बैंक है आपकी ना, MCB, उसका स्विफ्ट कोड एक होगा। अब ये आपकी ब्रांच का कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं ना, ये है जी 8 स्पेलिंग का, जो है ना 8 स्पेलिंग का आपको स्विफ्ट कोड होता है, जो कि आपने इसको आपने पास नोट कर लेना होता है। आगे आपने सिर्फ इसके आगे सिर्फ आपने अपनी ब्रांच का जो कोड होता है ना, ब्रांच कोड, वो लगाना होता है। जैसे ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये हर ब्रांच का ऐसे ही होता है कि आपने जो है ना, ये 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। पहला जो ज़ीरो होता है ना, तो ज़ीरो आपने हटा देना। जो नेक्स्ट 3 हिस्से होंगे ना, वो आपने इसके स्विच कोड के आगे लगा देना होता है। 8 स्पेलिंग होते हैं स्विच कोड के, आपकी कोई भी बैंक के आगे आपने ब्रांच कोड लगा देना है। अब आपको ब्रांच कोड कहाँ से मिलेगा? आपकी जो चेक बुक होती है ना, उसके ऊपर भी लिखा होता है ब्रांच कोड, ठीक है जी। और अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपकी चेक बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो आपने जिस ब्रांच में आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया था ना, उस ब्रांच में या तो आप कॉल कर लें, अगर आपके पास नंबर है, नहीं तो आप जाकर भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो स्विफ्ट कोड जो होता है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। दूसरे नंबर पे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी बैंकों के नाम डाल दिए हैं, और साथ टाइम स्टैम्प जो होता है ना, वो मैंने लगा दिया। आपने जो ना अपनी बैंक का नाम जो है ना, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये वीडियो प्ले हो जाएगी। तो आपने वहाँ वीडियो के अंदर से नीचे येलो पट्टी है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्विस कोड। येलो पट्टी के ऊपर 8 स्पेलिंग लिखे होंगे, वो आपने नोट कर लेने अपने पास। और आगे आपने अपनी ब्रांच जो होती है ना, उसका ब्रांच कोड 3 हिस्से लगा देना, ज़ीरो हटा के। अब आपने तीसरी बात ये है कि आपने जो है ना अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना है। नाम भी साथ मैंने बैंकों के डाले हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आपने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है लाजमी, मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। आप जो ना आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएँ और वहाँ पे आप क्लिक करें, आपकी बैंक जो भी होगी ना, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे नाम के ऊपर, तो आपकी जो ना वहाँ से वीडियो प्ले हो जाएगी। आपको सारी वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको जो ना आपका स्विफ्ट कोड वो मिल जाएगा। All Baraka Bank Swift Code. All Meezan Investment Swift Code. Allied Bank Limited Swift Code. Apna Microfinance Bank Swift Code. Askari Bank Swift Code. Bank Al Habib Swift Code. Bank Alfalah Swift Code. Bank Islami Swift Code. Bank Makramah Swift Code. Bank of Khyber Swift Code. Bank of Punjab Swift Code. Purge Bank Swift Code. Dubai Islamic Bank Swift Code. Finca Microfinance Bank Swift Code. Faysal Bank Limited Swift Code. First Women Bank Limited Swift Code. HBL MFB Swift Code. HBL Habib Bank Limited Swift Code. Habib Metro Bank Swift Code. JS Bank Swift Code. KASB Bank Limited Swift Code. MCB Bank Limited Swift Code. MCB Islamic Bank Limited Swift Code. Meezan Bank Limited Swift Code. Mobilink Microfinance Bank Limited Swift Code. NBP Fund Management Limited Swift Code. NIB Swift Code. National Bank of Pakistan Swift Code. Neopay Private Limited Swift Code. Samba Bank Limited Swift Code. Silk Bank Limited Swift Code. Sindh Bank Limited Swift Code.
Sonari Bank Limited Swift Code. Standard Chartered Bank, Pakistan Limited Swift Code. Telenor Microfinance Bank Swift Code. UBL United Bank Limited Swift Code.